Welcome everyone to the Generation Gap podcast. I'm Taimur Meet, that's Daniel Ahmed. So Daniel, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? It's little garden feeling जो नहीं होती. गार्डन हो Yeah, गया. yeah. So it's a magical feeling. Like this is recount के कहाँ से हम आए हैं और कहाँ. यार 4 दिन पहले तो मैं मैच देख भी नहीं रहा था यार. मैंने मैच तो सब देखा जब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को. So like yeah, it's a very surreal experience. Exactly. And that's the fun of it, right? That is the fun of being a Pakistan cricket fan. And I think I remember this old article 2011 में किसी ने गार्डियन में डाल रखा था, जिसमें कहा था कि Pakistan is not just the most interesting uh, team in cricket, but the most interesting team of all time. Yeah. So इसमें वही बात है कि the way they've actually given us so many ridiculous, amazing moments and so much heartbreak, and then on both sides, अच्छा भी और बुरा भी. मतलब भंड भी बड़े जबरदस्त किस्म के मारे हुए हैं out of nowhere और मैचेस भी जीते हुए हैं from like almost impossible scenarios. तो इस वजह से I mean it's a roller coaster, and it's definitely in the last like year or so it's not been good for our cardiac health for sure. ये मैच मतलब लिटरली हर मैच जो है ना वो लास्ट ओवर में जा रहा है. टेंशन बनी होती है, मतलब मुसलसल टेंशन चल रही होती है. T20 में तो वैसे भी इतना वो कंप्रेस्ड किस्म के मैचेस होते हैं ना कि हर मतलब बॉल जो है इट कैन बी अ गेम चेंजर. तो इट्स जस्ट नॉट बीन वेरी गुड. तो या बट एनीवे, before we get started on the episode, let's start off with our sponsorship message. So this episode is brought to you by the exclusive sponsor of the Pakistan cricket team. ये क्या हो रहा है? So Yeah. बाबे से हार गए, ये क्या हो रहा है? साउथ अफ्रीका से जीत ये क्या हो रहा है? सेमीफाइनल में पहुंच के ये क्या हो रहा है? फाइनल में पहुंच के ओ भाई ये क्या हो रहा है? So again, ये क्या हो रहा है? Yeah. It works across the board for the Pakistani team. So getting to the game that was played today. So पहले तो आई थिंक बात करते हैं टू द बिल्ड अप फॉर द गेम, जिसमें मैथ्यू हेडन जो है वो सबके सामने बैठे हुए थे. आई डोंट नो कितने बॉयज को मैथ्यू हेडन की अंग्रेजी समझ आ रही थी, लेकिन आई थिंक दे अंडरस्टूड स्पिरिट ऑफ व्हाट वाज बीइंग सेड. To be क्या fair, रिजवान अच्छी बोल रहा था आज इंग्लिश, तो आई थिंक ये हेडन जैसे लोगों के साथ बैठ बैठ के इन लोगों को इंग्लिश आ गई है. मजबूरन उन्होंने सीखनी Yeah. पड़ी. उन्होंने तो उर्दू नहीं सीखनी थी, उन्होंने कहा भाई तुम ही सीख जाओ. बेस्ट तो होता कि वो स्पीच दे रहा होता. Yeah. उसने अंग्रेजी में स्पीच दी, उसमें वही कह रहा था कि नो टीम वांट्स टू फेस अस, एंड इन अ वे दैट्स ट्रू. कि जब पाकिस्तान टीम जो है, आई थिंक व्हाट आई रियलाइज, पाकिस्तान इज लाइक द श्रीलंका ऑफ द एशिया कप. क्योंकि उनका भी यही सीन था, बड़ी घटिया किस्म की बिगिनिंग थी, एंड देन मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट दे काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट. और उसके बाद फिर वंस दे काइंड ऑफ उनका एक मोमेंटम जब चल पड़ा तो फिर कोई भी टीम को रोक नहीं पाई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. इवन दो पाकिस्तान प्लेइंग प्रीटी वेल, लेकिन जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले था इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट अनडिनाइबल एट द टाइम. तो अभी पाकिस्तान का भी जिस तरह मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, it is very difficult for any team to face us. And New Zealand, to be fair, did a pretty good job. So starting from like the power play, first thing हमने notice की कि Shaheen Afridi seems to be back in form. He looked great. वही जो उसकी एक typical tail back करने वाली डिलीवरी है, तो मतलब इवेंट स्टार्ट, मतलब पहली बॉल पे चौका लगता है, सेकंड बॉल पे अपील होती है, जिसपे तमाम लोग, जिनको लगा था कि यार एरास्मस बिका हुआ है, उसने किसी भी सूरत बाकायदा वीडियो बना रही थी. किसी बंदे ने रैप वीडियो बनाई हुई थी जिसमें दोनों इंडियंस जो है खड़े होके, आई थिंक एक तरफ कोहली खड़ा होता है, एक तरफ जो है वो खड़ा हुआ है अपना आई फॉरगॉट कौन सा खड़ा हुआ था, और वो जो है वो रैप कर रहे हैं और एरास्मस को कह रहे हैं कि जी आपने पाकिस्तान को जीतने नहीं देना. और उसने मतलब वो जो एक पहली सेकंड आई थिंक जो थी बॉल, उस पर उसने आउट दे दिया, जिसपे अपील करते हैं, पता चलता है नॉट आउट है. देन द थर्ड डिलीवरी अगेन उसी तरह की वो टेल बैक करवाता है, 10 बार लगती है तो फिर उसे आउट दे देता है. वो फिर दोबारा उसको रिव्यू करते हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी डेड ऑन. सो स्टार्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, वहां से मुझे लगता है कि पाकिस्तान माइट एक्चुअली रन थ्रू देम. लेकिन न्यूजीलैंड टू देयर क्रेडिट वर एक्चुअली वेरी सॉलिड. उन्होंने जो एक उनके टैक्टिक्स थे, जिस तरीके से वो खेलते हैं, दे वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट. बट द सरप्राइजिंग थिंग फॉर पाकिस्तान वाज कि जब कभी भी
न्यूजीलैंड वाले अटैक करने की कोशिश करते थे या दे वुड एक्चुअली गेट द बॉल in the gap or play a stroke, at that particular time the fielding would come to their help, which for me was the biggest surprise. क्योंकि I think even like the first over में क्या था जब शादाब ने second over में शादाब ने डाइव मार के एकदम बाउंड्री को रोका था. That was actually quite surprising for me कि यार ये क्या हो रहा है. चले वो फिर मैंने कहा चले शादाब है, शादाब तो कर ही देता है. But throughout पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो बहुत strong थी. Even though they didn't take too many wickets, but the ground fielding saved a lot of runs throughout the game, and I think that kept the pressure on the team. But New Zealand, to their credit, did not crumble, despite the fact कि उनके ऊपर शुरू से pressure पाकिस्तान ने डाला हुआ था, and there were no real bad deliveries. हर बंदा आके अच्छी bowling कर रहा था. Maybe Shadab to some extent, but क्या कह रहे? Yeah. One thing I noticed about like New Zealand की चीज़, and I pointed this out to my dad who was like watching with me. It was like कि हम fielding बहुत अच्छी कर रहे हैं, but it's not like that's demotivating New Zealand from taking doubles and triples, right? So वो कोशिश ज़रूर कर रहे थे बार बार, even though that they knew कि like कि fielding अच्छी, normally any ordinary side जब इतनी फील्डिंग अच्छी हो रही होती है तो दे वुड गेट डीमोटिवेटेड, या सिंगल्स लेंगे नहीं या डबल या ट्रिपल्स नहीं लेने की कोशिश करेंगे. But consistently they were trying to take single doubles even though they knew कि fielding बहुत outclass हो रही है, and that showed a lot of intent कि हम pressure में नहीं आने वाले. And that was like I think one of the reasons why they ended up with such a huge score comparatively. मुझे लगता था कि at some point पाकिस्तान की bowling जो है it will actually get through the New Zealand team. एक ओवर आएगा जिसमें एकदम 2-3 विकेटें गिरेंगी और बिल्कुल collapse कर जाएंगे वो. I think we did that something similar to them in the series against them, जो try series हुई थी before the World Cup. तो मुझे शक था कि शायद दोबारा भी इस तरह से हो जाए because Pakistan was bowling really well, pressure डाला हुआ था उनके ऊपर. And I thought कि maybe they'll crumble under the pressure, but no such thing. न्यूजीलैंड वालों का इतना मैं कहूँगा कि जो उन्होंने प्लान बनाया था बहुत उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया. जो उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है कि शुरू के ओवर्स में हमने थोड़ा रोकना है, लास्ट 10 ओवर्स में we're going to go at 10 and over, and that's exactly what they did. On the dot जैसे ही 10 overs हुए, New Zealand started attacking. They started going after the bowling. और उन्होंने शुरू में I think एक ओवर में कुछ 2 बाउंड्रीज भी मारी थी I think शादाब को. तो they were immediately क्या हुआ? It's a rapper sound that's very sharp. Sound. यार फातिमा इसको ना खोले. सही है, ठीक है. So anyway, मैं ऐसे कह रहा था कि credit to them, they kept playing really well, and they actually gave a very competitive target for Pakistan, even though थोड़ा disappointing था. मुझे लगा कि अच्छा कोई ना कोई विकेट ज़्यादा निकलेगा. Shaheen I think got 2 wickets, that was about it. उसके अलावा एक रन आउट था. So in that sense Pakistani bowling didn't get as many wickets as they normally would, and the target was also a bit higher than they would normally have. I think usually the Pakistani team 140 के आसपास most teams को dismiss कर देती है. They managed to get over 150. I think since the India team, no team had really gone past like 140 for Pakistan, if I'm not wrong. Yeah, that was highlighted by the commentators कि like 130 से आगे नहीं पहुंची कोई team against bowling. 130 से आगे नहीं पहुंचे. Exactly. तो वो एक बात है कि मतलब they were actually did really well to go to 150. So मतलब जो पाकिस्तान की टीम का almost par score था उससे वो 20 runs ऊपर मार ही गए. But for the pitch, I think it was actually a pretty maybe slightly below par in pitch. Probably अच्छे it was like a really good batting deck. Even though थोड़ी बहुत शुरू में मुझे लग रहा था कि cross bat shots के लिए मसला हो रहा था. I think down the ground was much easier, but cross bat में थोड़ी सी बॉल हल्की सी रुक रही थी. If you remember, a lot of people playing pulls, but kind of थोड़े से वो timing उनकी off हो रही थी. उतने वो smoothly उनको hit नहीं कर पा रहे थे. So maybe not that easy of pitch, but not so difficult either. कि उस पे मतलब रन्स मतलब 150 was maybe slightly below par in that regard कि पाकिस्तान ने काफी अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करके उनको वहां तक रोक लिया था. But yeah, I mean overall like a really evenly balanced, like first innings में लग रहा था कि मतलब बहुत tough जो है वो sort of competition चल रहा है between bat and ball. मसला I think probably start होता है when क्या उसे कह सकते हैं the second inning starts, and जितनी कंसिस्टेंटली खेल रहे थे न्यूजीलैंड वाले और जितना प्रेशर को फेस कर रहे थे, आई थिंक जो एक बाबर का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया. ओवरऑल द फील्डिंग वाज लाइक द बिग डिफरेंस आई थिंक, क्योंकि मे बी यू कैन से देयर बॉलिंग वाजंट ग्रेट, बट आई थिंक उन्होंने कोई बहुत बुरी बॉलिंग भी नहीं की थी.
लेकिन फील्डिंग में दे ड्रॉप लाइक 3 कैचेस ड्यूरिंग द गेम. और अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपके पहले ओवर में जब बाबर और रिजवान की अभी पार्टनरशिप स्टार्ट भी नहीं हुई थी, आप बाबर का कैच पकड़ लें, even though I know he has not been that consistent and he hasn't really been performing that well for Pakistan, and the middle order has actually been doing pretty well. But Ironically, we I don't. kind of skipped over the part about how ironic this is. Like, yeah. Exactly. वो तो हम भूल ही गए ना. आयरनी तो काफी अच्छे पहले की थी इस मामले में कि पाकिस्तान तो लोग कह भी रहे थे ना जी बिफोर द वर्ल्ड कप कि यार हमारा ओपनिंग पे तो बहुत अच्छा है, बस मिडिल ऑर्डर जो ठीक हो जाए. उसके बाद हम कह रहे वर्ल्ड कप कह मिडिल ऑर्डर तो बड़ा अच्छा है, हमारा ओपनिंग पेयर जो है ना वो ठीक हो जाए. Yeah. अभी वही बात है कि सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई थी कि रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले ही कैच एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दे ड्रॉप दैट. और उसके बाद that just kind of gives like Babar a second wind, and suddenly this is like going back almost 6 months or so, okay, when this partnership was going to get great guns और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, I think that was also quite interesting. And besides just the fact कि जो 100 पार्टनरशिप उन्होंने मारी थी, I think ये था कि नजर आ रहा था कि कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और एक फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले नजर आ रहा था जो कि मैंने काफी अरसे से दोनों से नहीं देखा. जो रिजवान की टिपिकल शॉट्स हैं कि ही वाज जस्ट गोइंग अक्रॉस द लाइन और लेग पे उनको हीव कर रहा था, एंड रिजवान प्लेइंग 200 प्लस स्ट्राइक रेट, बाबर गोइंग अराउंड 130. One thing worth pointing out is कि रिजवान ने वो क्या कहते हैं कट भी मारा है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का. तो लाइक वो एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म आ रही थी कि ऑफ पे नहीं मार रहा है, उसने आई थिंक कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेले हैं ऑफ साइड की तरफ, व्हिच शोज अ वेरी नाइस लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट. हाँ बिल्कुल. आई थिंक उसकी कट भी व्हेन इज बैटिंग वेल तो आई थिंक उसकी कट शॉट चल रही होती है. वन थिंग ही डजंट हैव इज लाइक उसकी एक वो ड्राइव वाकई नहीं है. लाइक फुल बॉल को ऑफ पे उस तरह से नहीं खेल सकता. ही ऑलवेज प्लेज इट डाउन लेग पे, या वो उसको हीव कर देगा या फुल मार देगा या इवन जस्ट ट्राई टू वो जो यूज हिज. ऑकवर्ड स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं ना जो कि बहुत इफेक्टिव है समहाउ, बट लाइक या लेकिन वो मतलब उसकी कवर ड्राइव ऐसा नहीं है. इतनी अच्छी बाबर की कवर ड्राइव है, ही बेसिकली डजंट हैव अ कवर ड्राइव एट ऑल. उस वजह से मतलब दैट शोज यू his ability in the sense that this guy has a batting average of over 50 without having a cover drive. He's a very limited player. He's a very limited. Yeah, so sense mein it's very like it's kind of interesting how he's actually managed to build his game around his limitations and kind of figure out ways and workarounds कि उसके बगैर मैंने कैसे जो है वो बैटिंग करनी है. बिकॉज कवर ड्राइव तो पहली चीज है जो कि एज अ बैट्समैन आपको सिखाई जाती है नॉर्मली कि यार आपको एक अच्छी कवर ड्राइव मारनी है और वो एक पहचान होती है एक अच्छे प्लेयर की यूजुअली. बट फॉर समवन टू डू इट विदाउट अ कवर ड्राइव इज जस्ट it's amazing. It's like being a sprinter without having 2 legs or something. एक टांग पे अगर आप स्प्रिंटर बन जाए, इमेजिन करें, it feels that weird कि आप उस तरह से करें. लेकिन अगेन आई थिंक बॉलिंग जो है उनकी ठीक थी, बट दे जस्ट लुक pretty ominous the way they were batting. I think both Babar and Rizwan जिस तरीके से वो कर रहे थे, जिस तरीके से उनका स्ट्रोक प्ले चल रहा था, it was kind of phenomenal. मतलब उसके बाद I don't really remember them playing a bad stroke or giving too many chances. Maybe एक edged shot थी जो शायद ऊपर से पीछे से गई थी, but that's all I can remember. One thing I found very disappointing was कि मतलब Rizwan was striking at 200, but I think by the end of the innings it was like down to 138, which is like 140 approximately. But it's kind of disappointing कि वो I think वो level of strike rate को maintain नहीं कर पाता, and that goes about a point that we were talking about in. Well as well for Rizwan, क्योंकि रिजवान की हमेशा मैंने कहा that's like a very classic रिजवान है. क्योंकि रिजवान हमेशा यूं ही करता है कि starts off hitting at like 200 and then he slows down over time. He goes down to like 130 140 क्योंकि वो usually power play में इस तरह की shots खेलता है. But it doesn't keep going like that after the power play. Power play के बाद वो थोड़ा सा single double पे focus करना शुरू कर देता है. That's his game. रिजवान के साथ बाबर जो है वो इसलिए ही sort of works क्योंकि जो पावर प्ले की जब एक अंदर फील्ड होती है तो he takes like the main bulk of the responsibility for making playing like these kind of strokes, and then Babar can sort of tag along. And उसके बाद जब इनिंग खुल जाती है then Babar can start playing more aggressive shots. तो वो इस तरह से है कि they can maintain like the strike rate of the partnership overall. लेकिन पहले रिजवान तेज खेलता है, उसके बाद बाबर थोड़ा तेज खेलता है. बाबर शुरू में स्लो खेलेगा and he builds it up as he goes along. And Rizwan starts off really quickly and then sort of slows down afterwards. Yeah, and I think that works for them in the way that like
So like Rizwan is better with like lofting and being like just उसकी technique ही ऐसी कि like he can be like that ruthless aggressive if he wants to. Like that works a lot in power play. The power play खत्म हो जाता है तो you need that placements like आपको gaps निकालने होते हैं. And that's where Babar shines. And I think we've seen this countless happen like countless times. Power play में Rizwan मारेगा फिर एकदम से after power play Babar becomes very aggressive. So that हाँ, it's a match made in it's heaven. a Like very textbook Babar Rizwan partnership in a way. We haven't really seen yeah, it for a while now. Although I think last जो उन्होंने innings इस तरह की खेली थी, which almost seems like a one-off in some ways, was he like 200 के खिलाफ 200, I think 200 किया था या कितना किया था 200, chase. 200. हाँ. They won by 10 wickets, which is unreal. तो वही था कि उसमें there was the last time we saw them play like that, but उसमें भी it was the consistency was kind of missing. क्योंकि हम Yeah, एक चीज देखी थी बीच में और उसके पहले और उसके बाद बिल्कुल हमें उस तरह की कोई पार्टनरशिप नजर नहीं आई. द गुड थिंग बिफोर दैट वाज कि वो कंसिस्टेंटली ये है कि में 50 टू 100 के बीच में बना रहे थे. yeah, अभी ये था कि 10 मैचेस हैं, एक में आप 100 रन पार्टनरशिप मारेंगे और बाकी में आप कुछ नहीं कर रहे. So I think the consistency had kind of gone out of their partnership. That was like the big issue for Pakistan. But because of that, I think एक जो चीज ये भी थी कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को इतना एक्सपोजर मिला कि उसने एक्चुअली काम करना शुरू कर दिया. Because one of the big problems earlier on was कि आपकी मिडिल ऑर्डर को तो बैटिंग टाइम मिलता ही कोई नहीं था. yeah, So because of that, I think in a way they've been tested and they've actually been forced to prove themselves. And the Pakistani management has also been forced to kind of find a middle order partnership and certain role definition as well. जिसकी yeah. वजह से उनके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम चलना शुरू हो गया. सो कमिंग टू दैट बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई. पहले तो मैं ये लगा कि बताएं. Before that, it's just kind of funny कि हमारी experimentation well into the World Cup चलती रही. So like हमारा जो combination जो set हुआ है वो बांग्लादेश के मैच में set हुआ है, which is like the match before semi-finals. But हम like फिगर आउट कर रहे थे. it's a perfect आई थिंक combination हमने now. बात भी की थी कि दैट माइट एक्चुअली बी समवट ऑफ एन एडवांटेज फॉर पाकिस्तान. जो हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, इफ यू रिमेंबर, साउथ अफ्रीका का हमने कहा था वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद देम माइट बी कि दे आर बिट मोर रिजिड with their overall style of play, which means कि they'll be very good in bilateral series. लेकिन जब Yeah, knockouts आते हैं तो वहाँ पे they're not flexible enough to change on the fly. And since Pakistan has that kind of flexibility, जब उन्हें लगता है कि ठीक है यार हमारे ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा, एक और बंदे को ले आओ, इस बंदे को निकाल दो, इसको डाल दो, and then like as the tournament goes along, they just start coalescing and starting and start forming like these roles and patterns which worked really well in like the 2017 किसी चैंपियंस ट्रॉफी थी कि आपको पता था कि अच्छा यार हसन का काम है कि उसने मिडिल ओवर्स में आके विकेटें निकालनी है. आपको पता है कि जी शोएब मलिक का काम है कि उसने आके फिनिशिंग करनी है और एक क्विक इनिंग्स खेलनी है विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्क्स. यू न्यू कि कोई लेफ्ट हैंडर आएगा तो आपने फौरन हफीज को बॉलिंग पे लगा देना है. ऑल ऑफ दैट स्टफ लाइक छोटी चीजें लेकर बड़ी चीजों तक आपको पता था कि हर बंदे का क्या रोल है, किसने किस तरह से बैटिंग करनी है, किसने किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस जगह पे बॉलिंग करनी है और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. yeah, तो वो चीज लेकिन हमने सॉर्ट ऑफ ऑन द फ्लाई डिस्कवर की थी. मतलब लिटरली हम क्या था अपना फखर को टूर्नामेंट के मिडिल में लेके आए थे. yeah. फिगर आउट कि अच्छा हमें कोई ओपनर चाहिए थोड़ा एग्रेसिवली खेले, किस बंदे को लाए. तो उस पहले अजहर अली खेलता था अजहर अली आपका खेल रहा था तो उसके साथ आप किसी न किसी को तो रखना है. किसको लेके आए, अच्छा ये बंदा है फखर है, इसको ले आते हैं. सो इस तरह की सिचुएशन थी कि आप ऑन द फ्लाई यू वर जस्ट काइंड ऑफ फिगरिंग थिंग्स आउट एंड देन यू डिड. और यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुई कि ऑन द फ्लाई आपने कहा कि अच्छा यार ठीक है हमारे पास जो है वो मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाएं. अच्छा शान जो है वो चल नहीं रहा, फखर जो है वो इंजर हो गया है, अब किसको लाएं. अच्छा हारिस को ले आते हैं, पहले शान को लेके आते हैं. अच्छा शान नहीं चल रहा तो चले फिर हारिस को ले आते हैं, फिर शान को थोड़ा नीचे भेज देंगे. और क्या नाम है अपना इस तरह से मतलब हमने सॉर्ट ऑफ लिटरली. और हमारे पास हमने पहले नवाज को लगाया हुआ था कि फिर हमें समझ आया कि अच्छा यार यहाँ पे दो स्पिनर्स के साथ एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के बगैर जो है जाना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है. आफ्टर द फर्स्ट इंडिया मैच हमने फिगर आउट किया. सो वी एडेड क्या नाम है अपना वसीम जूनियर इनटू द टीम. और yeah, उसके बाद एक एडिशनल फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मिल गया दैट एक्चुअली मेड आवर बॉलिंग अटैक अ लॉट स्ट्रॉन्गर एंड गिव अस अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. सो अगेन थ्रू द टूर्नामेंट हमने फिगर आउट किया. रिस्क उस चीज का ये है कि मसला है कि आप शुरू के ग्रुप स्टेजेस अगर आपके टफ होते हैं ना तो बहुत दफा होता है कि आप नॉकआउट भी नहीं पहुंचते. इफ यू मैनेज टू गेट टू द नॉकआउट्स तो यू हैव वेरी स्ट्रांग चांस.
But it's the problem जो हमारे साथ basically जो 2019 के World Cup में हुआ. Pakistan did really well and they kind of figured out their combination, and by the time they did and they actually started performing well, आखिरी matches में थोड़ा मसला हो गया. Pakistan just barely missed out on qualification. अगर पहुंच जाते तो I think they had a very strong chance of winning. इस तरीके से वो खेल रहे थे. लेकिन again risk strategy का ये है कि you might not recover in time to get to the next stage. यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम पहुंच गए और once we've gotten there तो हमारी combination already set हो चुकी है और momentum जो है build हो चुका है, तो it's much harder to beat Pakistan at this point. Yeah. One thing I realized about in contrast game, this is something I saw in the like the match itself. I finally I think figured out why New Zealand has such bad luck with like finals and semi-finals, and they haven't been able to win a limited overs tournament since like forever. I think they have figured out how to perform well in tournaments, but unki strategy about winning tournaments it's non-existent. Because the idea is that New Zealand is a very plan A team. They don't have a plan B. They've never मैच में भी देख लें, हर प्लेयर का एक क्लियरली डिफाइंड रोल था कि हमने ये करना है और फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, which is fine, right? Which works, and that's the reason why they were at the top of the table of like Group 1, and like they were doing so well. But in knockouts, you need that flexibility. You need that sense of कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, हर हाल में जीतेंगे. They stick to their method too much, and that's why you see like अभी like Babar and when Babar and Rizwan were having a partnership, right? Kane Williamson never changed up his bowling. तो जो उसने मैच से पहले डिसाइड किया हुआ था ना कि ये मेरा बॉलिंग होगा, स्केड्यूल होगा, वही उसने फॉलो किया. इवन दो 100 पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग की, he didn't consider कि मैं अपना थोड़ा सा मेथड चेंज कर लूं. And again that flexibility and वो this serious lack of genuine match winners, because I don't think there's a lot of players in there that are like you could say कि बाजी पलट सकते हैं. Because होता ही है कि I think in teams जहाँ पे there's a strict adherence to method, you have players जो उस मेथड से निकलने से ना घबराते हैं, उनको encouragement नहीं दी जाती by management, तो वो उसी मेथड में ही रहते हैं. और फिर उससे होता ही है कि when push comes to shove, you don't have a genuine match winner in the team. Nobody has the confidence to be that genuine match winner. So that's a consistent problem with New Zealand. You cannot win a World Cup if you do need a method. You do need a like sort of like a combination. But this is cricket. It's sports. Sports में कुछ भी हो सकता है. So you cannot really stick to one plan alone. With Pakistan, you can see that like at any given point, any player can walk in and take the match away, and you need that. India has that. Australia had that last year. So you need that sort of like match winning players, which sadly New Zealand doesn't have. So they are a team that can consistently go to the final. Have more flexibility, they'll never really win. So what you're saying is there's a madness to the method. There's a what? Yeah, you're saying there's a madness to the method. Yeah. You stick too much to it, you're going to lose, especially in these kinds of games. And I agree. I think that's a very good, apt observation, because वो बात है कि New Zealand की team again was very consistent. And और मतलब उन्होंने अपने plan से वो हटे नहीं. लेकिन मसला वही into their plans too much. They weren't able to, adjust and kind of, change their game to sort of stop Pakistan and to kind of do something unpredictable in the moment. जहाँ पे शायद Pakistan team would have been caught off guard. क्योंकि मसला ये है कि with a team that has such a rigid structure and such a rigid plan, दूसरी टीम को भी already पता है कि वो क्या करने वाले. तो पाकिस्तान knew exactly कि न्यूजीलैंड ने कैसे खेलना है और किस तरीके से उन्होंने बैटिंग करनी है, किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करनी है, and they were probably prepared for that. मसला तब बनता है कि जब आपको कोई अगली टीम जो है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज कर देती है. Like it's like very similar in football, for example.
you need to have some player who has that kind of flair in your team, who can do something unpredictable with the ball. Yes, the team needs a structure and drills and all planning, कि आपने balls को कैसे pass करना है और positioning कैसे करनी है and all that. But every team needs to have like that kind of a flair player कि जिसने कोई एकदम suddenly game breaking moment को कर देना है कि एकदम खड़ा हुआ है and suddenly he just runs past two players and just completely disrupts the other team structure. उनकी डिफेंस को तबाह बर्बाद करके सडनली या ऐसी को पास निकाल लेगा जिसकी वजह से दिस विल क्रिएट लाइक अ गोल स्कोरिंग मोमेंट. सो you need to have that kind of unpredictability in your side in order to win tournaments, especially. बहुत structured up होंगे तो आपके लिए थोड़ा मसला हो जाता है. It becomes a problem at times because you can become too rigid and you can आपकी अपनी planning आपके लिए in a way limitation बन जाती है. Yeah. I think that's a very interesting point that you raised, and in a way very similar to what the kind of problem that sometimes South Africa has, कि उनका भी है कि वो इस तरह की flexibility उनके पास भी नहीं है, but I think New Zealand is a bit more successful in the sense कि they are probably better at facing pressure. Like they can, जैसे हम बात भी कह रहे थे, पाकिस्तान बड़ा उनको pressure डाला but they didn't crumble. They are like a high functioning South Africa in some ways, कि जहाँ पे एक टीम ने अपने प्लानिंग बनाई है तो वो हर सूरत में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे चाहे जितना भी प्रेशर डाल दिया जाए. They won't crumble. But sometimes even that's not enough because the plan is not good enough. And you don't really have the flexibility to change the plan on the fly. And Pakistan भी है कि it's all about on the fly, जो हम भी बात भी कर रहे थे. हम तो अपनी literally टूर्नामेंट में आके हम फिगर आउट करते हैं अब क्या करना है. चले आ तो गए, अब देखिए अब क्या करना है. In fact, in a way, अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी sort of एक सिमिलर मसला था. Because especially बाबर की कैप्टनसी में भी कि बाबर was like also very formulaic as a captain. कि उसका भी ये था कि यार बंदे को इस टाइम पे लेके आना है, मैंने इस बंदे को यहाँ पे रखना है, इसके मैंने ये बैटिंग करानी है, इससे मैंने ऐसे बॉलिंग करवानी है, इन ओवर्स के बाद इस बंदे की बारी आएगी, इन ओवर्स के बाद इनकी बारी आएगी, लास्ट ओवर ये कराएगा ये कराएगा ये कराएगा. इट बिकेम अ बिट प्रेडिक्टेबल. और उस वजह से भी आई थिंक उनके मसला हुआ था. दैट्स प्रोबब्ली व्हाई दे आल्सो लॉस्ट इन द सेमीज बिकॉज़ अगली टीम को पता था कि उन्होंने क्या करना है. तो वो I think that was something he's actually learned. He's actually a lot more flexible now. I noticed कि इसकी कैप्टनसी के दौरान. Has he learned that or was he forced to learn that? Because अगर आप जिम्बाब्वे से हार गए और एकदम से लग रहा है कि like वर्ल्ड कप But at least in his bowling changes मैं कहूँगा वहाँ भी मतलब पाकिस्तान ने bowling अच्छी की है. I would say that. मैं ये कहूँगा कि bowling में तो बैटिंग में तो मैं क्या कह सकता हूँ. बैटिंग में तो चले that's another thing. लेकिन I think in terms of like on field captain कि जहाँ पे आपने decisions देने के किस बंदे ने bowling करनी है, किस बंदे field placement हमने कैसे रखनी है, because I think especially इस मैच में इसकी bowling जो fielding decisions they were remarkable. जहाँ और जो matchups ने किए that was like really well thought out. क्योंकि ये exactly उन लोगों को लेके आया था उस टाइम पे जो who had like very high success rates against those particular batsmen. या उसे पता था कि अच्छा ये बंदा लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ जल्दी आउट होता है. ही ब्रॉट अ लेफ्ट आर्मर ऑन. उसे पता था अच्छा हारिस ने इस बंदे को बहुत आउट किया, वो हारिस को लेके आ गया फौरन. सो आई मीन दैट वाज लाइक रियली गुड कैप्टनसी. लाइक बड़ी सोच समझ के उसने बड़ी लगता था फ्री प्लानिंग के साथ ऑलमोस्ट वो चल रहा था. ही सीम टू हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑन दीस बैट्समैन एंड उसने मतलब नजर आ रहा था कि बड़ा सोच समझ के उसने बड़े अच्छे फैसले किए थे. सो बट देयर वाज आल्सो लाइक अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आती थी कि जहाँ पे वो ऑन द स्पॉट डिसीजंस भी ले रहा था फील्ड के साथ जिस तरह से कोशिश कर रहा था. सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ वाज क्वाइट रिमार्केबल थिंग टू सी कि उसने भी अपनी कैप्टनसी को कैसे इंप्रूव किया. So I think compared to the last World Cup, overall his captaincy has been a lot better, even though his own batting has gone down. I think बड़ी वजह ये भी थी कि उस टाइम पे a lot of questions that were being asked were being answered by his batting. अभी उसकी बैटिंग उतनी नहीं. But I think as a captain, he's doing a lot better. Like his on-field decision-making has been a lot better, comparatively speaking. यार ये लोग बात कर रहे हैं कि उसको ये निकाल देंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप. आई थिंक अगर जीत जाएंगे तो नहीं निकाल पाएंगे. बट इट वाज आई फेल्ट इट वाज वेरी अनफेयर. अब तो अगर गिवन द मतलब आप आर्ग्यू नहीं कर सकते. शायद आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो फाइनल के बाद अगर हार भी जाए फॉर एग्जांपल तो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी. हाँ अगर ये नॉकआउट हो जाते, मैंने ये कहा था अगर निकल भी जाए पाकिस्तानी, यू रिमेंबर, तो मैंने कहा था कि इतनी जल्दी बाबर को निकाला नहीं जा सकता. His reputation is too big. You need at least 2 or 3 bad tournaments in a row
get him out. तो अभी इससे पहले है वो इंग्लैंड से हारे थे, लेकिन उसके बाद ट्राई सीरीज जीत गए थे, वर्ल्ड कप में भी आ गए हैं. तो अगर नॉकआउट हो भी जाते तो एटलीस्ट इट वुड हैव बीन लाइक वन बैड टूर्नामेंट, बट यू नीड लाइक 2 or 3 in a row to get a player of his stature away from the captaincy. I think we have a golden opportunity to have like an Allan Border type कैप्टन जो लाइक बिल्कुल ही एक घटिया टीम को एक ऐसे पॉइंट पे ले आए जो एक इन द फ्यूचर डोमिनेंस लाइक डिक्लेयर कर सके अपनी एंड लाइक they're able to stand on their own and the reason why I say it's a golden opportunity and only Babar can fulfill it because he has that unique quality of like making the team his own. So वो बहुत सारे कैप्टन नहीं कर पाते. सरफराज जितना भी अच्छा था वो कभी टीम उसकी टीम नहीं लगी. He was the captain of that team, he was the leader of that team. But बाबर feels like कि या ये बाबर की टीम है. So उस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए to build up a squad that can be good even after he retires. So this is a very good opportunity. That's a very interesting discussion, and for that I would kind of go back to like a very earlier discussion जो हुई थी regarding the kind of influence that, for example, Tendulkar had on the Indian side compared to the kind of influence that a lot of the big 90s stars of the Pakistani team had. Like उसमें ये था कि Tendulkar जब गया था, when he left like this remarkably strong Indian team that was ready to take on the world. मतलब वो एक world dominant force उस टाइम तक बन चुके थे. जब वो आया था, India was like a has been or also ran type team. Pakistan was a dominant team. West Indies were a dominant team. Australia भी उतनी उस जमाने में शायद 90s में नहीं थी, but they were there and thereabouts. That लेकिन वही बात है कि जिस टाइम पे वो आया था, जिस टाइम पे वो छोड़ के गया, वो एक जमीन आसमान का फर्क था between those two sides. तो एंड 90s में अगर आप देखें जो पाकिस्तानी लेजेंड्स थे जो कि हम कंपेयर करते हैं तेंदुलकर के साथ, वसीम अकरम हो गया, सईद अनवर हो गया, ऑल ऑफ दीस पीपल व्हेन दे टीम वाज इन एब्सेंस. जब वो छोड़ के जाते हैं 2003 वर्ल्ड कप के बाद, पाकिस्तान टीम को कम से कम कोई 12 साल लगते हैं बिफोर दे स्टार्ट रिकवरिंग. Like at least we have a decade of shame almost in like the 2000s or maybe more than that. लेकिन वही बात है कि उसके बाद से that's something that most Pakistani captains haven't really done since maybe मुश्ताक मोहम्मद, I would say, जिसने जब टीम जो when he left तो फिर इमरान खान आया था and then we had this dominant period in the 80s. But he's the one who kind of started that process in the 70s कि जब उसने sort of टीम को मजबूत बनाना शुरू किया. 70s की पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी नहीं थी, but he came in and he started kind of making them a lot stronger. And जाए मसला नहीं, ठीक है. अच्छा, so basically उसमें क्या नाम है अपना बाबर को, सॉरी मैं कह रहा था कि हाँ. So I think one of the things that most Pakistanis have not been able to do since Mushtaq Mohammed is to build a team over time जो कि आगे जाके मजीद स्ट्रांग हो सके. Because वही बात है कि I have not seen it in front of my eyes. I think maybe to some extent आप कह सकते हैं कि 80s की टीम जब खत्म हुई थी उसके बाद 90s की टीम भी स्ट्रांग रही थी. But I still feel like the 80s team was a bit stronger than the 90s वाली team. 90s वाली team अच्छी थी. They were very talented, but they were not as consistent as like the 80s wala squad. Like chokers as well, weren't they? So like 90s की team. 90s की team was up and down, very very talented, very mercurial, but not as consistent as the 80s wala squad. 80s squad बहुत consistent था, was I think overall a lot stronger. But yeah, I think उसमें it might have been at the same level or maybe a slight step down, but not a huge one. Maybe 10-20% है, थोड़ा नीचे आप consider कर सकते हैं. But 90s के बाद तो बहुत ही major fall off आपका आता है. You have like a serious fall off. But इसमें सवाल ये उठता है कि अगर आपका Babar is like the Allan Border, then who will be his Steve Waugh? That's the question, right? Should be someone very young. Maybe someone like Shaheen. Maybe Shaheen, हाँ. Maybe Shaheen. Could be Shaheen who could take over from him. क्योंकि वही बात है कि I think there's another person you're forgetting. Shadab. Oh yeah, Shadab he's just really good, isn't he? As a tactician. So very smart, came in very young as well, and also has this ability to absorb pressure really well as well. वो भी इसमें है, क्योंकि pressure में बड़ा अच्छा खेलता है. Although उसका captaincy record, like Shaheen has actually won the PSL. I'm not sure Shadab has actually won it. I think उसकी captaincy में शायद नहीं जीते.
I mean he performs well personally, लेकिन उसने अभी तक शायद PSL तक नहीं जीती. So वो एक चीज है, even though he's a good captain and much better than I expected. And he's like a good player under pressure as well. And he has kind of the personality that allows him to lead the team. But वो देखना पड़ेगा कि मतलब कौन बंदा है जो उसकी जगह पे आ सकता है या जो उसको sort of replace कर पाएगा. It's going to be a difficult task, obviously, especially if Babar ends up winning the World Cup. खास तौर पे he is close to that, but again अभी जीता नहीं है. If he does manage to win it, तो चले एटलीस्ट पे सरफराज के बारे में बातें करना हम बंद कर देंगे. That will be huge relief. वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी अगर हम उसके बारे में अब बोलना बंद कर दें. I mean, I appreciate the man. I loved him as a test wicket keeper, and definitely the 2017 में Champions Trophy is one of my favorite cricketing memories of all time. But yeah, I mean, it's a bit played out. Especially अगर आप, especially if you have Rizwan, तो अब आप मतलब कहाँ आप डालेंगे उसको? नहीं, अब रिजवान भी नहीं, अब तो हारिस है ना, लाइक हैज अ बैकअप. सो लाइक बैकअप है. Yeah. मैं भूल क्यों, हारिस भी कीपर है यार. I forgot about that. Yes, हारिस भी कीपर है. But yeah, तो वो है मतलब. And speaking of Haris, going back to the innings के जब हारिस आया था, so हारिस का भी I think एक कैच छूटता है शुरू में. And surprisingly, Haris plays like a very non-Haris kind of an innings. क्योंकि by the time he gets out, he has like a strike rate of 116. लेकिन जो उसने बीच में 2 शॉट्स खेले थे ना, those I have to discuss कि किस तरह से, I mean, very reminiscent almost of the Virat Kohli sixes. Not as good, but still probably the closest that a Pakistani player has come to that. क्योंकि दोनों deliveries जो हैं बुरी नहीं थी. 2 pretty decent deliveries getting hit for boundaries. क्योंकि जो पहली बॉल थी, that was probably one of the most difficult shots that I've seen a Pakistani batsman play. क्योंकि आपकी almost like 145-150 के बीच में यॉर्कर जो है वो ऑलमोस्ट लेग स्टंप पे पड़ता है. यू हैव टू मूव बैक एंड देन यू हैव 2 फील्डर्स और उनके बीच में से आपने निकालना है. एंड यू डोंट रियली हैव मच ऑफ अ बैक लिफ्ट. आपने सिर्फ रिस्ट के साथ खेलना है. ही जस्ट गोज बैक एंड ही यूजेस हिज रिस्ट टू गाइड द बॉल थ्रू द गैप. और पीछे भी एक फील्डर खड़ा है, उसको भी आपने बीट करना है. So he manages to bisect those and gets it past that. That was like picture perfect precision. जो that was. And shows his strength as well. Like जो उसका एक wrist work है ना, like बहुत flexible wrist थी उसकी. जिस तरीके से उसने अपने आप को twist करके, he just kind of found that gap. That was really, really remarkable. Not moves around his body quite a bit. Like मैंने देखा है. So like मैं काफी बार यही सोचता था. तो मैंने पिछले पॉडकास्ट पे भी यही बात की थी कि इसके अंदर ये जान आ कहाँ से रही है कि ये इतने बड़े शॉट मार रहा है. एंड अब आई नोटिस कि ये अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है साथ में. तो ये एनी शॉट दैट ही प्लेज, एक तो या फिर आगे आके खेलेगा या पूरा घुमाएगा अपने आप को. तो उससे वो जो फोर्स जनरेट होती है ना. एंड देन देयर इज आल्सो टाइमिंग. ही इज अ वेरी अंडररेटेड टाइमर ऑफ द बॉल. तो वो सारी चीजें फैक्टर इन होती हैं टू अ वेरी गुड. I'd call him a finisher. He is a finisher. He plays like a finisher. So yeah, especially a very classic T20, like the kind of player that we wish Asif Ali could be. Like वो बंदा जो आके आए और हर दफा consistently छक्के मार के और गेम को finish कर दे. He does that, but he has a very similar kind of a Asif Ali stroke, जिसमें he just kind of walks across the stumps and tries to hit it down the leg side. वो एक उसकी बड़ी मिलती जुलती उसकी शॉट है, but he has like a bigger variety of stroke play. Like उसकी ऑफ पे बड़ी प्यारी शॉटें हैं. He knows how to hit the gaps as well, and he tends to be more of a 360 player. किस तरह पीछे जाके पैडल पे शॉट्स भी मार रहा होता है और वो उस तरह की चीजें भी कर रहा होता है. So I think in that sense he again didn't play like a very classic innings, but जहाँ पे जरूरत थी पाकिस्तान को, जो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था, he played 2 really remarkable shots. First जो उसने निकाली, second वाली again very classic. क्या कह सकते हैं, हारिस शॉट. ही इज रियली गुड एट द शॉर्ट बॉल्स. उसने पुल पे बड़े छक्के मारे हैं. सो दिस वाज राइट अप हिज एली इन अ वे कि, और इनफैक्ट पहली शॉट से दूसरी शॉट जनरेट होती है. क्योंकि उसने जब यॉर्कर पे उसको चौका मारा तो उसको पता था कि अच्छा अगली बॉल ये शॉट ही कराएगा. ही इज नॉट गोइंग टू रिस्क बॉलिंग अनदर फुल डिलीवरी. और वो पहले से तैयार बैठा हुआ था. उसने जैसे ही शॉट कराई उसने रख के उसको छक्का मारा. तो रियली गुड बैटिंग फॉर हिम. और I mean that basically took us to the precipice. But coming to that, जो हम बात कर रहे थे ना on the fly किस्म की जो पाकिस्तान की होती है, उसमें again one of those miracles जो दोबारा हमारे साथ हुआ was kind of figuring out कि हमने शान मसूद को कहाँ पे खिलाना है.
So Shan Masood comes into the Pakistan team to replace Fakhar Zaman, और उसके बाद फिर he doesn't really perform, like वो रन बना रहा है लेकिन just very, क्या कह सकते हैं, अजीब वो कब्ज वाले रन्स बन रहे होते हैं उसके हमेशा, कि even when he's making runs he does not look comfortable at all. और मतलब रन्स भी बहुत ज्यादा उसने मारे. हम्म? He gets the job done at least. हाँ, So like, मैं कह रहा हूँ जब उसको नंबर 3 पे भेजा गया था, तो नंबर 3 की जो उसकी oh सोफा, हाँ, आई वाज गोइंग बैक टू yeah, वेयर ही वाज इन द टीम बिफोरहैंड. जब नंबर 3 पे था तो उस वक्त मतलब काफी कुछ रन्स उसने मारे भी थे, कुछ इनिंग खेली थी, बट ही जस्ट लुक वेरी अनकंफर्टेबल. And the only good innings he played was when he was sent in as an opener during a warm up game. और उसके बाद दोबारा उसको एज एन ओपनर तो ऑफ कोर्स नहीं भेजा जाता. And then he sent in at number 3, and against India he just has like one of the luckiest innings of all time, जहाँ पे कुछ 4 या 5 दफा वो आउट होता है, and he just does not get dismissed at all. And this overall he just does not look like वो टीम में फिट हो रहा है किसी भी जगह पे. And then because Mohammad Haris comes in, and suddenly उसकी position भी आपको Mohammad Haris खिला रहे हैं, you send him in at number 4. So now he has, इसकी हम बात करते हैं, like this Shoaib Malik role in some ways. You send someone towards the end as a finisher, जिसका काम है कि who has like a high strike rate and low risk. So what he does is he comes in, उसे पता है कि अच्छा मैंने आना है और मैंने बाउंड्रीज नहीं मारनी, मैंने डबल और ट्रिपल निकालने. So he comes in, पता है आपने lower down the order आना है, फील्ड खुल चुकी होगी, so there are gaps in between. So he just comes in and he just tries to hit those gaps and go for 2s and 3s and the occasional boundary. And he has like a 140, 150 strike rate without taking much of a risk. और उस वजह से like he's been given that finisher role now, which he seems to be very comfortable with. And I think like you mentioned कि he seems like a very adaptable sort of a batsman, जिसको मतलब पता होता है कि सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को फौरन चेंज कर लेता है. I think that's the kind of player you need, especially as a finisher. क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको पता नहीं होगा, maybe you need to bat quickly, maybe you need to slow things down अगर विकेटें ज्यादा गिर गई हैं. So he has that kind of flexibility to kind of evolve his batting accordingly. So I think that has also been like a huge boost for the Pakistan team to have someone like that in the middle. I do want to talk about one thing, which is Marius Erasmus, and I think हम मजाक बहुत कर सकते हैं, but I think empires are good if we never notice them. Like the job of empire is to be as invisible as possible. That's a sign of a good empire. And like one of the greatest are people that you wouldn't even recognize. Oh, इसका नाम क्या था? Like कुछ होते हैं जो like जिनका गिमिक एक ऐसा होता है कि जो झुक के चलते हैं या उनकी शक्ल थोड़ी recognizable होती है तो इसलिए पहचान जाते हैं. But like ordinarily empire should be people जिनका आप नाम भी नहीं जानते. Marius Erasmus, big question mark. I think he should be demoted. I don't think he should be given these big matches to sort of empire on, because जो पहली जो शाइन की जो विकेट थी, that was an inside edge and that was a heavy inside edge. उसको pick करना हर हाथ में. So like this sort of, I mean if people are, I remember I was joking with my family कि उसने विकेट के बाद जो उसने अपना पेपर खोला तो people were like what is he writing on, and I said कि he's checking his receipts from both PCB and BCCI. and it's like big question that scene, वो याद है वो जो सीन हुआ था, स्पेशली जो सेकंड वाला जो उसने आउट दिया था तो उन्होंने इसको दोबारा से ना किया था. उन्होंने इसको थर्ड एम्पायर को भेजा था, एंड थर्ड एम्पायर ने जैसे वो था ना, जैसे थर्ड एम्पायर ने उसको आउट दिया, he did this and did this. If you see that, तो दूसरा एम्पायर के साथ, हाँ, the other umpire was walking up to him, तो जैसे ही उसने कहा कि stay with, and he went like this, और दूसरा एम्पायर आया तो they did like a fist bump. तो मैंने कहा ये तो बड़े इंडियंस इसके जिफ बनाएंगे कि देखिए जी आउट देने के बाद कितना खुश हो रहा है कि उसने इसको फिस्ट बम्प दी कि और मजीद पैसे मिल गए. well it's वही बात है कि like again it's आज लाइन तो मैं करा रहा हूँ. आज डिनर मेरे पे. it's very disheartening because एक और बॉल थी जो कि like अब एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हारिस रऊफ ने जो आखिरी बॉल करवाई थी अपनी स्पेल की, दैट वाज अ क्लियर नो बॉल. नहीं थी, वेस्ट से ऊपर थी काफी, बहुत बहुत ऊंची बॉल कराई थी उसने, यहाँ कहीं कराई थी, राइट? नहीं थी. So I was just talking about how big question mark on his umpiring. I'm guessing he's a senior umpire.
and that's very questionable. I think all round the umpiring of this tournament has been weird. मैं तो हाँ. कहता हूँ एम्पायरिंग थर्ड एम्पायरिंग भी बहुत अजीब थी, हॉकाय बड़ी अजीब थी. जो बाबर का जो एलबीडब्ल्यू था, आई डोंट थिंक उस एलबीडब्ल्यू में इतना हाइट आ रही थी जितनी हॉकाय दिखा रहा था, बिकॉज वो बहुत आई थिंक वो पैड की जो दो लाइनें होती हैं उससे नीचे हिट हुआ था. तो हाउ कैन दे प्रेडिक्ट कि इतना ज्यादा बाउंस हुआ है? मेरे ख्याल में तो वो मिडिल स्टंप क्लिक कर रहा था. अगेन आई एम सेइंग दिस एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, दिस वाज आउट. बिल्कुल. Like big question marks on like umpiring. I don't know how you could fuck up Hawkeye, but they did. So like it's what it is. हाँ, आई थिंक वो एक अच्छा पॉइंट है बिकॉज अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज वर कंप्लेनिंग कि जी एरास्मस को खरीद लिया है और एम्पायर जो खरीद लिया है. आई थिंक द मोर वैलिड पॉइंट इज कि एम्पायर की क्वालिटी बहुत डाउन रही है. यस देयर वर सम बैड डिसीजंस जो पाकिस्तान के खिलाफ भी गए थे, बट overall there have been bad decisions everywhere. They just happen to be against us in that match and they happen to be in our favor in this game. लेकिन एम्पायरिंग की Yeah. क्वालिटी ओवरऑल बेहतर होना चाहिए. Erasmus is one part of the problem. Third umpiring definitely has been a huge issue. I think सबसे ज़्यादा लोगों ने जिक्र इसी का किया था थर्ड umpiring का कि उसकी क्वालिटी काफी डाउन थी, which is something you never really thought would happen कि थर्ड umpiring पे ऊपर हम जो है वो सवालात उठा रहे हैं, because that seems like the simplest thing to do. लेकिन that's been a big issue as well. So I think yeah, it is something that needs to be looked into in terms के ये ना हो कि आपके कोई फाइनल में कोई बहुत बड़ा स्पॉइलरी किस्म का डिसीजन हो जाए. Yeah. And of course, no one's gonna ever going to stop talking about it अगर ऐसा हुआ तो. So I think that's something that needs to be looked into in terms of the quality of the umpiring. So yeah, I mean, so match done and dusted. Pakistan into the finals. So अब बड़ा सवाल ये आता है कि हर बंदा बात कर रहा है 92 का वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप, 92 में भी यही हुआ था. बट एट दिस पॉइंट which World Cup is it? Is it the 92 World Cup? Is it, as Usman Samiuddin said, the 99 World Cup? Or as you were saying, the 2007 का World Cup? So उसमें हम I स्टार्ट you करें know 92 का क्यों yeah है वो चल मैं बात कर लेता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज इट लाइक द 92 वर्ल्ड कप. क्योंकि चलें अभी भी इंग्लैंड कैन क्वालिफाई and we can have like a Pakistan England final similar to what we had back in the 92 वाला World Cup. And of course ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें वर्ल्ड कप भी हो रहा था. And yeah, I mean उस सेंस में तो चलें we still have a chance of a 92 का repeat. But वही बात है, जिस सेंस में 92 का नहीं बनता, एक तो ये है कि स्पेशली जो सेमीफाइनल था, यस इट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन जो 92 का वर्ल्ड कप था ना, दैट वाज लाइक अ वेरी क्लोज गेम. और yeah उसमें almost for like 70% of the game or 80% of the game, New Zealand were dominating Pakistan. And Pakistan was just barely keeping their head above water. बॉलिंग के दौरान भी उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट दिया था. आई रिमेंबर उनके जो कैप्टन था उसने सेंचुरी भी मारी थी, आई थिंक मार्टिन क्रो ने. Martin, हाँ, मार्टिन क्रो हैड अ सेंचुरी एज वेल. सो दे लुक प्रीटी गुड. उन्होंने उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट भी पाकिस्तान को दिया था. एंड पाकिस्तान बिल्कुल एंड तक हमने पहुंचाया था और बिल्कुल आखिरी ओवर्स में जाके हम जीते थे. इट वाज लाइक अ रियली टफ चेस फॉर पाकिस्तान. एंड मोइन खान उस जमाने में आके ही हैड टू come in and hit a few late boundaries in order to kind of finish the game off. लेकिन this was very reminiscent of like the 99 World Cup final जहाँ पे पाकिस्तान बड़ा dominant तरीके से न्यूजीलैंड को हराया था. This is more reminiscent of that. वाइब्स भी बड़े सिमिलर हैं कि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा. ऑल्दो उसमें पाकिस्तान बड़े आराम से क्वालिफाई कर गया था. यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है. पाकिस्तान बहुत मर मर के क्वालिफाई किया, which is very 92 in some ways. But outside of the way that Pakistan kind of beat New Zealand and very comfortably went into the semi-finals, I think उसके अलावा कुछ चीज 99 वाली मुझे लग नहीं रही. I don't know आपको 2007 वाली वाइब्स किस तरह से आ रही हैं? yeah. I think 2007 इसलिए आ रहा है because I think it's a tournament between India and Pakistan. This is everything in between is just a warm-up match. Granted कि कुछ warm-up matches against Zimbabwe we lose, but 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 हाँ. it does feel like it's just our show and like everyone else is a spectator. Um, I think 2007 में nobody embodied T20 cricket better than India and Pakistan. And I think जो हम उसकी प्राइम वजह ये थी कि जो गली मोहल्ले की क्रिकेट थी सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत T20 फॉर्मेट जो उस दौर में नया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करती थी. तो उस सेंस में दे वर डूइंग दे डिड वेरी वेल एज अ टीम.
That's a good point, and you can go back to that. Also, my mind में आया था because considering a lot of Pakistani, especially the bowlers, used to be tape ball players. Yeah, काफी सारे पाकिस्तानी जो आए हैं, बहुत सारे tape ball players थे who played like 5 over games, and they're very used to this thing of really good batsmen going after them in like really small grounds, जहाँ पे मतलब हर वक्त उनको मतलब उसको चाड़ने की कोशिश में लगे होते थे वो, and they somehow knew how to survive that. तो उनके लिए this is like a very natural thing for them. They've sort of grown up with that kind of an environment. या एंड देन इंडिया में वो एक कॉन्सेप्ट है कि मुंबई के मैदान जो है उसमें आई थिंक वेरी सिमिलर क्रिकेट टू T20 इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. तो लाइक उस सेंस में दिस वाज ऑलवेज लाइक 2007 में इट वाज अ वर्ल्ड कप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट आई थिंक फिर भी दोनों टीमें बहुत इमेच्योर थी. ऑब्वियसली ना भी आपका एक एज है against other teams, but still a new format for you. But I think in the past 15 years since like T20 has existed, we've come to a point where both people who sort of originated or sort of made this format popular, like India and Pakistan का final था, उसकी वजह से IPL हुआ था ना. So like these two teams that have made T20 cricket what it is today, they have especially match was like in a way indicative of where the two teams would go in some ways. yeah. Like with and you had Dhoni captaining that team. I think उसके बिल्कुल early days the captaincy के. Might have been his first tournament as captain. It was his first match. He was given the captaincy for the tournament. So yeah. So his tournament as as captain, or that वही बात है कि that kind of decided in some ways the future of the next 10 years of Pakistan cricket, because the two big figures in that were Misbah-ul-Haq and Mahendra Singh Dhoni. And like these two men would go on to define their nations for the next 10 years. Dhoni in his own way and Misbah in his own way. Pakistan was not as successful, but वही बात है कि Misbah का अपना he casts a very long shadow over the Pakistan team in the next 10 years. He defines, and वही बात है कि जब बात करते हैं अपनी टीम होती है, Misbah created his team. Like उसकी जो test team थी, that was very much Misbah's team. The way they played, this sense of game करते. Dhoni did the same thing as well for the Indian team. उसमें उसने अपनी छाप छोड़ी थी, and the kind of influence that he has that we continue to see from that point onwards up to this side, कि जिस तरह से था, and that in a way was a very crucial tournament. I wonder in the future if this tournament would have the same kind of importance as well for Pakistan or India. उसमें I think वही link आ जाता है कि we have like on one hand Misbah and Dhoni who have been crucial in like not just being like really good players for their countries, but also shaping the cricket of that country, right? So like I think जो पाकिस्तान का revival हुआ था, I think by this point no doubt it happened to Misbah, whether it be as a captain or the coach of the team. So like अभी जो team है, जो सारे players हैं, वो सारे Misbah के ही coach हैं, या एक कोई ना कोई Misbah का touch जरूर दिख रहा है. So I think this is what has happened is कि since the 15 years since that World Cup happened, we have reached that point of like कि दोनों टीमें full strength में. They are वो जो I don't know if you watch Shan anime, but like होता है ना final form होता है, like with like full power level होता है. This is what it is. It's like both of these teams, they have never been as good as they are right now, especially in this format. So this feels like their World Cup. But I've been a very strong proponent of this. I think जो नॉन सबकॉन्टिनेंट टीम है जो आई थिंक T20 को थोड़ा सा सीरियसली लेती है वो इंग्लैंड है. मेरे ख्याल में जब भी ऑस्ट्रेलिया खेलता है ना तो लगता है मजाक कर रहा है. Like they feel like they're at a party. मजाक से हटकर we just don't see that level of seriousness or commitment from Australia, and that's why it hurt a lot when they won the fucking World Cup last year. Like हम इतना सीरियस को ले रहे थे. We had by far and away the 5 मैच जीत के हम आए थे और इनको भी बड़े आराम से मारे थे. मतलब we genuinely deserve to win like the last World Cup. और उस सेंस में भी 92 की वाइब्स by the way दोबारा आ सकती हैं, क्योंकि 87 वाली टीम को जीतना चाहिए था. They didn't win. 92 वाली टीम को नहीं जीतना चाहिए था, वो जीत जाते हैं. तो इसी तरह से पिछले वर्ल्ड कप में कहूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप में हमारी टीम को जीतना चाहिए था. That was like the strongest team we had put out. They don't win. They lose in the semi-final to Australia, very similar to the 87 World Cup. तो उस तरह से अगर ये वाला जीत जाते हैं तो this would be very much in line with what happened like the 92 World Cup के पिछला हारने के बाद अगले वाले में Australia fails to qualify playing at home and Pakistan ends up winning.
losing the last World Cup where they were the absolute favorites. So that in itself would be very much 92. लेकिन देखते हैं कि अभी क्या होता है कि will it be 87, will it be 92, will it be 87 तो नहीं हो सकता, चले सॉरी अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि one of the teams is like लेकिन चले 92 वाला कर सकते हैं. अभी भी मैं देख रहा हूँ जॉस बटलर की ट्वीट आई हुई थी बाय द वे, इसमें क्या था कि we will make sure that there is no India Pakistan final. किसी लिखा हुआ था कि यार ये वाहिद बंदा है जिसको हमारी मेंटल हेल्थ का ख्याल है. It is ironically the British that is stopping an India-Pakistan rivalry. So I think we have to end. That's like the perfect way to end this. इससे बेहतर हम नहीं कर पाएंगे. So yeah, so we'll see you guys hopefully next time for the final. देखते हैं कुछ में क्या होता है. Ending remark. I think whoever wins, कल, colonialism won at the end. So like, yeah. Exactly. Whoever wins, we lose. वो I think Predator movie का था. उसका tag. So exactly similar to that. चले भाई. Okay, I'll see you again. Yeah, next time. Bye. Bye to everyone.